अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th बुक फिज़िक्स चैप्टर नंबर 9 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स न्यूमेरिकल्स कि आज का हमारा जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड है कि आज हम चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो द न्यूमेरिकल नंबर 1 इज़ फर्स्ट न्यूमेरिकल the half life of N167 is 7.3 second. A sample of its nuclide of nitrogen is observed for 29.2 seconds. Calculate the fraction of original radioactive isotope remaining after this time. Numerical number 1 is the half-life of nitrogen 67 is 7.3 seconds. A sample of its nuclide of nitrogen is observed for 29.2 seconds. Calculate the fraction of original radioactive isotope remaining after this time. कि जो हाफ लाइफ है नाइट्रोजन की वो 7.3 सेकंड है, लेकिन एक सैंपल का न्यूक्लियाइड का हमने ऑब्जर्व किया है कि 29.2 सेकंड्स के बाद कितनी फ्रैक्शन इसकी रह जाती है। तो सॉल्यूशन, लेट हाफ लाइफ ऑफ N167 इज T1/2 7.3 सेकंड। Original activity A0 as after time T1/2 its activity will become A0/2 कि जो ही एक टाइम इंटरवल हम उसकी ओरिजिनल एक्टिविटी A0 ले लेते हैं और जो ही जो टाइम इंटरवल T1/2 गुजरेगा तो उसकी एक्टिविटी 1/A0/2 रह जाएगी। और जो ही आफ्टर 2T1/2 कितने होगा, 2 × 7.3 = 14.6 सेकेंड कि वो क्या होगी, उसकी एक्टिविटी 14.6 कैमन होगी, जिसको हम A0/4 कहेंगे कि वो क्या है, A0/4 है। इसी तरह आफ्टर 3T1/2 3 × 7.3 21.9 सेकेंड, उसको हम A/8 कहेंगे, 8/8। नेक्स्ट इज आफ्टर 4T1/2 4 × 7.3 28.2 सेकेंड, फिर हम इसको A/16 कहेंगे। तो फिर आंसर क्या होगा, हैंस 1/16 ओरिजिनल सैंपल विल बी लेफ्ट आफ्टर 29.2 सेकेंड कि 29.2 सेकेंड्स के बाद क्या होगा कि जो उसका ओरिजिनल सैंपल है वो 1/16 रह जाएगा, यानी 16 हिस्से जो है बदर्जे 16 तक वो रह जाएगा। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, 2 कोबाल्ट 60 in a radioactive element will be half life
5.25 years. What fraction of the original sample will be left after 26 years? Cobalt 60 is a radioactive element, will be have a half-life of 5.25 years. What fraction of the original sample will be left? What fraction of the original sample will be left after 26 years? कोबाल्ट जो 60 है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और 5.25 ईयर्स के बाद कितनी फ्रैक्शन जो है सैंपल की वो रह जाएगी 26 ईयर्स के बाद. सो सोल्यूशन हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट 60 is T1/2 5.25 years. As time T1/2 5.25 years, A0/2. After 2T1/2, 2 multiplied by 5.25 is equal to 10.50 years. Then A0 is equal to 4. कि जो ही टाइम 1/2 किसके 2 के बराबर होगा. देन आफ्टर 3T1/2 3 multiplied by 5.25 is equal to 15.75 years and A0 will be equal to 8. आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ, चौथी हाफ लाइफ के बाद 4 मल्टीप्लाई बाई 0.525 इज इक्वल टू 21.0 years. तो A/16. नेक्स्ट इज आफ्टर फिफ्थ हाफ लाइफ 5 multiplied by 5.25 is equal to 26.25 years and A0/32 की ओरिजिनल जो उसकी एक्टिविटी है वो 32 है. तो फिर हम क्या आंसर कह सकते हैं? Hence after 26 years, less than 1/32 of original sample will be left. कि आफ्टर 26 ईयर्स 1/32 ओरिजिनल सैंपल विल बी लेफ्ट, कि ओरिजिनल सैंपल जो है वो लेफ्ट रहेगा. ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 2. नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 3. Carbon 14 has a half-life of 5730 years. How long will it take for the quantity of carbon 14 in a sample to drop to 1/8 the initial quantity? The numerical number 3 is carbon 14 has a half-life of 5730 years. How long will it take
for the quantity of carbon 14 of a sample to drop 1/8 of इनिशियल क्वांटिटी, कि जब 1/8 हो की क्वांटिटी जो है कब तक, ये अब कितने सालों तक ये अपनी एक जो 28वीं हाथ होती है यानी 1/8वीं जो होती है उसकी वो कब तक रहेगा, यानी 1/8 फ्रैक्शन कब रह जाएगी। सो सोल्यूशन, लेट हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 is T1/2 5730 years. Original activity is A naught, as after time T1/2 5730 years, activity A is equal to 2. After 2T1/2, 2 multiplied by 5730 years is equal to 11460 years, and A naught will be equal to 4. After third half life, 3 multiplied by 5730 will be equal to 17190 years is equal to A/8 कि 1/8 जो है उसकी एक्टिविटी वो यहाँ रह गई, हैंस 1/8 ऑफ ओरिजिनल सैंपल will be left after 1.72 multiplied 10 raised to power 4 years, कि 1.72 जो है मल्टीपल 10 raised to power 4 years इतनी जो है उसकी ओरिजिनल वैल्यू यानी इतने सालों बाद रह जाएगी। ये आपका नंबर न्यूमेरिकल नंबर 3। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 4, टिटेनियम 99 is a radioactive element, and is used to diagnose brain, thyroid, liver and kidney diseases. This element has a half-life. This element has a half. This element has a half-life of 36 years. If there is 200 milligram of this technetium present, how much will be left in 6 hours, कि how much will be left in 6 hours, कि 6 घंटों बाद वो कितना बचेगा। टिटेनियम 94 has a half-life of Titanium 99 is a radioactive element and is used to diagnose brain, thyroid, and further this element has a half-life of 36
yes, if there is 200 milligram of this titanium present, how much will be in this present, कि कितना उसमें जो है वो प्रेजेंट होगा, कि टाइटेनियम जो 99 है वो कितना फर्दर प्रेजेंट होगा. तो सोल्यूशन विल बी next is solution. Half-life of technetium, half-life of technetium 36 hours, mass m किसके बराबर है 200 mg के, टाइम इज इक्वल टू 6 hours, नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या होगा 36/6 इज इक्वल टू 6. देन मैथ लेफ्ट फर्स्ट हाफ लाइफ, कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद जो मैथ रहेगा वो 100 mg, तो फिर सेकंड पे सेम मैथ इज इक्वल टू 50 mg रह जाएगा, थर्ड पे एज यूजुअल 25 mg, एज यूजुअल 25 mg, फोर्थ पे 12.5 mg, फिफ्थ पे 6.25 mg एंड सिक्स पे 3.12 mg, कि इतना रह जाएगा आफ्टर 6 आवर्स, यानी 6 घंटों के बाद वो है इतना रह जाएगा, जब उसकी 6वीं हाफ लाइफ भी गुजर जाएगी, यानी उसका जो मैस है वो 200 में से सिर्फ 3.12 ग्राम रह जाएगा. ये है आपका न्यूमेरिकल नंबर 4. नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 5. न्यूमेरिकल नंबर 5 कि फिफ्थ न्यूमेरिकल कौन सा न्यूमेरिकल है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स is 10 minutes if the initial count R is 368 counts per minute, कितने काउंट्स वहाँ मौजूद हैं पर मिनट. find the time for which count rates reaches 23 counts per minute, कि हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट in 10 minutes if the initial count is 368 counts per minute. Find the time for which count rates reaches 23 counts per minute. The solution is let half-life of a radioactive element is T1/2 10 मिनट्स, कि अगर हाफ लाइफ उसकी 10 मिनट्स हैं तो ओरिजिनल एक्टिविटी हमारे पास 368 काउंट्स हैं, कि 368 काउंट, सो एक्टिविटी बिकम A0/2 368/2 184 counts. After second time T2 1/2 multiplied 2 multiplied 10 is equal to 20 minutes, 20 मिनट बाद. नेक्स्ट इज
activity become a naught over 3, a naught over 4 is equal to 368 over 4, it will be 92. After third half-life, 3 multiplied by t1 over 2, 3 multiplied by 10 is equal to 30 minutes. Activity will be a naught over 8 is equal to 368 over 8 is equal to 46. Okay, 46 counts. After fourth half-life, 4 multiplied by t1 over 2 is equal to 4 multiplied by 10 is equal to 40 minutes. कि 40 मिनट्स के बाद क्या होगा, उसकी कितनी हाफ लाइफ होगी, तो एक्टिविटी विल बिकम a naught over 16, 368 over 16 will be 23 काउंट्स, ये वो 23 काउंट्स के बराबर होगी. Hence after 40 minutes the count rate will be 23 काउंट्स पर मिनट, कि 23 काउंट्स पर मिनट होगा. ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 5. नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 6. In an experiment to measure the half-life of a radioactive element, the following results were obtained. Count rate 400, 200, 100, 50, 25. Time 0, 2, 4, 6 and 8. In an experiment to measure the half-life of a radioactive element, the following results are placed: 400, 200, 100, 50, 25. 0, 2, 4, 4, 6, 8. Plot a graph between the count rate and time in minutes. Measure the value of the half-life of the element. Next is according to graph 0, 2, 4, 6 and 8. 25, 50, 100, 200 and 400. Twenty-five will be at 8, 50 will be at 6, 100 will be at 4 and 200 will be at this and this will at 0. कि ये क्या होगा, एक स्लोप ग्राफ आपके पास है मिलेगा और ये क्या है, एक ग्राफिकल व्यू है इसका. ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 7. नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 7. A sample of certain radioactive element has a half-life of 1500 years if it has an activity of 32,000 counts per hour at the
at the present time, then plot a graph of activity of this sample. A sample of certain radioactive element has a half-life of 1500 years. If it is an activity of 30,000 counts per hour, then present time, then plot a graph. Given data, solution, let half-life of radioactive element T1/2 1500 years. Original activity A0 is equal to 300 counts. First half-life T1/2 is equal to 3200/2 1600 counts. Second half-life multiplied by 1500 is equal to 3000 years, and counts will be 4 is equal to 800 counts per minute. And next is third half life 3 multiplied by T1/2 3 multiplied by 1/2 is equal to 3 multiplied by 1500 over 4500 years. Activity 3200 over 8 is equal to 1400 count. Fourth half-life, fourth half-life 4 multiplied by T1/2 4 multiplied by 1500 over 60,000 years, and 3216 is equal to 200 counts per minute. Then plotting a graph. Count rate 3200, 1600, 800, 400 and 200. Time 0, 1500, 3000, 4500 and 6000. A graph 0, 15, 3, 45 and 600. 8, 16 and 32. $800, 1600 and 3200. Then the graph will be like slope. ये क्या होगा, एक स्लोप ग्राफ बनेगा. और ये है आपका न्यूमेरिकल नंबर 7. नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 8. हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट वॉज फाउंड टू बी 4000 years. The count rates per minute for 8 successive hours were found to be 270, 280, 300, 310, 285, 290, 305 and 312. What does the variation in count rates show? Plot a graph between the count rates and time in hours. Why the graph is a straight line rather than an exponential? Count rates.
Solution is numerical number 8. Solution counted 270, 280, 300, 310, 285 and 290. Time 1, 2, 3, 4, 5 and 6 कि इस तरह अपने टाइम काउंट जो है वो अपने 8th न्यूमेरिकल के बना लेने हैं। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 9, लास्ट न्यूमेरिकल। ashes from a campfire deep in a cave show carbon 14 activity of only 1/8 the activity of fresh wood. The activity of fresh wood. How long ago campfire made? कि ashes from a campfire deep in a cave show carbon 14 activity of only 1/8 of the activity of wood. So how long will be the campfire made? Solution: half life of carbon 14 is equal to T1/2 5730 years, ratio 1/8. Half life T1/2 is equal to 5730 years. Then second, 2 multiplied T1/2 will be equal to 2 multiplied 5730 is equal to 14160 years. 3 multiplied T1/2 will be 3 multiplied by 5730 7190 years कि वो 17190 ईयर्स तक वो कैंप फायर लॉन्ग को चल सकती है। ये है आपका लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 9 ऑफ चैप्टर 9 फिजिक्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।